Hello aspirants, welcome to another lecture of Indian polity. In this video, we are going to cover the preamble of the constitution, which is called the identity card of the constitution. In this video, we are also going to discuss about various important terminologies such as justice, liberty, equality, fraternity, as well as socialist, secular, democratic, republic, and what are the meanings of these words. So without wasting any more time, let's begin. Dear friends, आज हम जानिबा preamble of the constitution जहां को मध्य हम माने कहउचे the identity card identity identity card of the constitution जेमिति आमे कोनोसी गोटे टेक्स्ट बुक जते बेला आमे देखिबा से टेक्स्ट बुक रे एमिति कि सूची पत्र थाए कॉन्टेक्स्ट लिखाई थाए कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट्स बेले बेले मध्ये लिखाई थाए कंटेंट्स कौन कौन कंटेंट्स थाए जेमिति कि लिखाई थाए चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ता माने ए कॉन्टेक्स्ट को देखबा मात्रे हम जानि परिबा जे टोटल जो बुक ता काहा ऊपर डिजाइन करा जाईची बा काहा ऊपर बेस करके टोटल बुक ता लिखा है से भलिया जदि देखिबा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गोटे बड़ कॉन्स्टिट्यूशन तेणु करी जदि देखिबा ए कॉन्स्टिट्यूशन केउ केउ आइडिया ऊपर बेस करके अछि बा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन प्रावधान गुडा को रखा है केउ केउ आर्टिकल्स रही केउ केउ प्रोविजंस रही बा ओवरऑली हमर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन काहा को नेगी बा केउ प्रिंसिपल को नेगी से आज तयारी हिची से सब जगह जिंस हम आज डिस्कशन करू तुम मन देखि पारथियो स्क्रीन रे जो कलर्ड पोर्शन ने हमर कॉन्स्टिट्यूशन अछि जो देखियो हमर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में एभले लिखा है ये प्रिएम्बल लिखा है प्रिएम्बल तार जमदी हम कहि पारे तार मुखपत्र लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice of social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. ता माने एठी कौन सी जगह मध्ये मेंशन करा हैनी जो माने हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर थिले केवल सेही माने ही हमको ए कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट करछन से बळा लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया माने हमें होचु जो माने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करले से माने होचन समस्त भारत रो सिटीजन माने एक्चुअली जे देखिबा हमर रिप्रेजेंटेटिव मानक थ्रू रे एक्चुअली लोक माने ही एका सब जगह पीपल माने ସେମାନେ ହିଁ ଏକା ନିଜ ପାଇଁ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ବା ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଲେଖା ହେଇଛି ଇନ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଦିସ୍ 26 ଡେ ଅଫ ନଭେମ୍ବର 1949 ତାହେଲେ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଛି और कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड जदि देखिया इंप्लीमेंट केतले हेतिला से होची 26 जनवरी 1950 एटा समस्त हम जानछे जाहु को हम रिपब्लिक डे भाबे सेलिब्रेट करछे रिपब्लिक डे तनु ए लिखा हिची हियर डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दैट मींस दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वी गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू अस ता माने आमे ही भारतीय माने हम मानक पई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तयारी कले कहा थ्रू रे आम मानकर रिप्रेजेंटेटिव मानक थ्रू रे जो माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर थे तनु एटा तला हमरो प्रिएम्बल ए जगह रे तुम देख परतो किछि कीवर्ड्स गुडा रहिछि कीवर्ड्स कोन प्रथम कीवर्ड जे देखिबा जस्टिस केउ केउ फील्ड रे जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड रे लिबर्टी कहा रहबो थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप
मनकर भावना रे मध्य तार लिबर्टी रहइबो एक्सप्रेशन आमे जहाँ चाहिए ताको आमे एक्सप्रेस करि परिबा बिलीफ आमर प्रत्येक जेकोसी जिनस आमे चाहिए आमर फेथ रखि परिबा बिलीफ मध्य करि परिबा सपोज कौन सी गोटे पर्टिकुलर रिलीजन अच्छी से कौन सी रिलीजन रो बिलीफ को सी मानि पारे बा ताको सी एक्सेप्ट करि पारे ताको कौन सी जगह रे मध्य ताको की रेस्ट्रिक्शन कर पारे ता सहित मध्य से वर्शिप रो मध्य समान को फ्रीडम मिलची इक्वालिटी इक्वालिटी केम फील्ड रे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी सम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जे देखिबा हमें जो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी भीतर जे देखिबा हमें एक्चुअली स्टेटस कोन केम फील्ड रे स्टेटस समान को रही केम फील्ड रे स्टेटस रही जदि देखिबा हमर प्रत्येक कम्युनिटी मानक भितरे समान भितरे इक्वालिटी रहइबो ता माने हम मानक मन रे क्वेश्चन आसीबा कथा जे देन ताहले रिजर्वेशन काई रिजर्वेशन तो रहिबा कथा नै जदि इक्वालिटी रही इक्वालिटी रो मीनिंग एहा नुह इक्वालिटी रो मीनिंग एहा नुह जे जे कोनोसी कम्युनिटी अछि समस्त को इक्वल ही चांस मिलियो ता नुह जदि कहीं अंडर प्रिविलेज्ड अछि जदि कहीं कौन सी गोटे कम्युनिटी बैकवर्ड अच्छी ताको आम मेन स्ट्रीम को आनिबा पई जहाँ जहाँ आमर प्रोत्साहन देवा कथा से गुडी ही रिजर्वेशन कहा तेणु से रिजर्वेशन देवा पर ही से माने आम सहित इक्वाल हेबे तामाने हम एठी जानि सारले जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ए सब जाक टर्म विषय आम माने डिस्कशन करबा ता सहित सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर ये एक्चुअली एगुड़ाकर फीचर्स कौन से गुड़िक आम डिटेल्स डिस्कशन करवा तेणुक कंप्लीटली वीडियोटा देखु नेक्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन अबाउट और प्रीएम्बल तो प्रीएम्बल एक्चुअली देखिए प्रीएम्बल रो कांसेप्टटा कोठू ओरिजिनेट हेतला से आसला हमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू को द्वारा ड्राफ्ट करा हेतला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे सेटा को ड्राफ्ट करा गला पर ताकू फर्दर ताकू एक्सेप्ट मध्य करा गला पर से जो नेहरू को से जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे जो जो फीचर्स गुडा बा जो जो प्रिंसिपल गुडा थिला से सब जाको गोटे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पेज रे जोटा को हम कहि पर फ्रंट पेज रे ताको ऐड करा गला और ताको प्रीएम्बल भाबे डिक्लेयर करा गला वर्तमान सुधा जो देखिबा ए कॉन्स्टिट्यूशन को हमरो अमेंडमेंट करा जाई परियो कि नहीं ताले इट इज अमेंडेबल amendable means that can be corrected ताको हमें करेक्ट करि पारे बा कोनोसी प्रोविजंस को हम मध्य चेंज करि पारे जदि आज पर्यंत देखिबा ये थरे मात्र चेंज करा हिची आज इंडिपेंडेंस पर ठारू आज पर्यंत केवल थरे चेंज करा हिची जहा कि हमर थिला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 42 अमेंडमेंट एक्ट थिला बा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जहा कि 1976 1976 मसिया रो 42तम संविधान संशोधन अनुसार संविधान बा हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल को थरे मात्र अमेंड कराइथला और तापर ठारू कोनोसी टाइम रे मध्ये ताको अमेंड करा हे तले से अमेंडमेंट अनुसार कोन हितला से तीनटा वर्ड ऐड करा हितला सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी क्वेश्चन भी आसपारे which of the following is not a word that was added by the 42th amendment act of 1976 ताहले सेठी बहुत गुड ऑप्शन दे पारे सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी एंड सपोज आ गोटे वर्ड किछि अदर वर्ड से जगह रे एंगेज कर देथियो ताल ताकू तुम माने ताकू मध्ये को कर पारे ताकू आइडेंटिफाई कर पारियो it contains a grand and noble vision constituent assembly रे जो जो विजन्स को लेकरी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट को लागला से सब जगह विजन्स गुडा को ए प्रीएम्बल रे मेंशन कराय ताहले हम प्रथम दिन से जानले कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किए पास करथिले से पंडित नेहरू पास करथिले वर्तमान सुधा केते थोर अमेंडमेंट ही चललाय थोरे मात्र अमेंडमेंट हेची जे कि 1976 रे आ सेटा थिला 42तम संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
से समय तीनोटी वर्ड ऐड करा कौन कौन से तीन सोशल सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। और जब देखिए ये हूँ हमर ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिएम्बल बा हम देखिए कौन कौन फीचर्स अच्छी प्रिएम्बल। ये हूँ हमर हमर कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड। ये आइडेंटिटी कार्ड टर्म टाको सर्वप्रथम किए यूज करते एनए पल्खीवाला। एनए पल्खीवाला डिक्लेयर करते दैट द प्रिएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ता सहित आउ किछि मत इट इज द समरी एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम संविधान रो समरीटा टोटली सारांशटा। ता सहित ये हमर फिलोसफी दर्शन क्यों दर्शन तत्व अनुसार बा हमर संविधान जो दर्शन उपरे बेस करिक अछि सी हमर प्रिएम्बल रे सब जाक मेंशन अछि। ता सहित इट सर्विंग एज अ बीकन ऑफ लाइट। बीकन ऑफ लाइट जेमति कहबे हो जेमति कहबे होप ऑफ लाइट आशार किरण आम मन पई। ता सहित हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक केउ वे रे जीवो ताहा ताहा हमर प्रिएम्बल रे मेंशन रही। ता सहित इट इज द aspirations of the founding fathers of the constitution। जो माने हमर कॉन्स्टिट्यूशन को फाउंड कले बा एडॉप्ट कले से महापुरुष मानकर किछि एस्पिरेशंस रहितला से मान किछि ड्रीम्स रहितला से ड्रीम गुडा को हमर प्रिएम्बल रे मेंशन करा जाय। ता सहित कोन जे देखिबा इट इज नेदर ए सोर्स ऑफ पावर। ता माने ए जो प्रिएम्बल रे जहा मेंशन करा हिछि से प्रिएम्बल रो हमर गवर्नमेंट को कौन से पावर जीवो बा कौन से लेजिस्लेचर को कौन से पावर जे ताहा नो ता माने इट इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर। माने बाकी पार्ट को नै कि हमर गवर्निंग हबो किंतु ये होची तार जेमिति कोहा गला इट इज द बीकन ऑफ लाइट। इट इज द ड्रीम माने ये क्यों इट इज द प्रिंसिपल आल्सो फॉर द लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर पई मध्ये प्रिंसिपल क्यों प्रिंसिपल रे लेजिस्लेशन हबो बा लेजिस्लेटिव असेंबली रे हमर जेमिति हमके असेंबली बा हमर कोन से लेजिस्लेचर रे क्यों प्रकार हमर प्रोविजन तयारी हबो बा क्यों प्रकार लॉज तयारी हबो से सब जाको गाइड करियो हमर प्रिएम्बल। इट इज नॉन जस्टिसेबल। इट इज वेरी इंपोर्टेंट नॉन जस्टिसेबल। ता माने जदि प्रिएम्बल रे कोन से एमिति जिंस रहिला जा फल रे कौन सी गोटे पर्सन गवर्नमेंट विरुद्ध केस कला ता माने आपको नॉन जस्टिसेबल ता ऊपर विचार करा जाय पारे एंड आल्सो नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। कौन से अदालत रे आपको एनफोर्स करा जाय परियो नहीं किबा आपको एटार मध्ये विचार करा जाय परियो नहीं। इट वाज इनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको हमें ऑलरेडी जान सकते एटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा हमरो इनैक्ट हेतला। जदि देखिबा हमर जो इनैक्ट कामटा ये पाखापाखि 26 नवेम्बर 1949 रे इनैक्ट हेतला। माने बहुत गुडे प्रोविजन सेही दिन ही केम टू फोर्स माने सेही दिन ही हमर एक्टिवेट हेतला। तापर कि मेजर पोर्शन दा से हमर 26 जनवरी 1950 रे ताको इंप्लीमेंट करा। तेन कर दीटा वर्ड रहले गोटे होची इनैक्ट। प्रीवियस वीडियो रे बिचासे बुझी सारची मु ये इनैक्ट आउ एनफोर्स भितरे डिफरेंस। with the people of India emphasizes that the constitution is made by and for the Indian people। ता माने ए कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करूची बा प्रिएम्बल ले डिक्लेयर होची जे ए कॉन्स्टिट्यूशन को सिटीजन ऑफ इंडिया बा पीपल ऑफ इंडिया का ताको फॉर्म करचंदी बा ताको तयारी करचंदी को मानक पई फॉर देमसेल्व्स से मानक पई ही से माने तयारी करचंदी। तेणुकर एठू ए को कॉन्सेप्ट इम्फासाइज कर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। ए लोक मानकर सार्वभौम भौमता रहिबो या को ही एही प्रिएम्बल मेंशन करछ बा शो करछ। कीवर्ड्स वर्तमान देखिबा कोन कोन कीवर्ड्स रहिछि जेम देखिबा प्रथम कीवर्ड होछि हमर सोवरेन। सोवरेन नो अर्थ कोन
इंडिया को गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट भाव डिक्लेयर कर गोटे कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट तार अर्थ हूँ इंडिया को कौन सी नेबरिंग कंट्री हो बा कौन सी पावरफुल कंट्री निजर डिपेंडेंसी स्वीकार करने बाध्य कर तार अर्थ आम देखिए ऑन द अदर हैंड आम देखिपर जे इंडिया रो प्रत्येक टेरिटोरी रे निजर ही सार्वभौमता रहिबो तार कौन सी प्लेस रे केही भी बा कौन सी गोटे कंट्री ताकू निजर अन्य कौन सी कंट्री रो रूल को एनफोर्स करिवो नाही इट इज फ्री टू कंडक्ट बोथ इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर ये निजर इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को फ्री भाव कंडक्ट कर से बाहर निजर अफेयर्स को मैनेज कर आउ भीतर मध्य अफेयर्स गुडा को से निजे मैनेज कर ता सहित जदि आम कंट्री चाहिए तेरे कौन सी फॉरेन टेरिटोरी की से एक्वायर कर पारे किंबा आम कंट्री रो कौन सी गोटे पार्ट को सीड कर पारे टू अनदर कंट्री आम कंट्री रो कौन सी किसी पार्ट को चाहिए अन्य कंट्री को दे पारे नहले अन्य कौन सी कंट्री रो टेरिटोरी को मध्य ये एक्वायर कर पारे ताको हम कहे सोवरेन सोवरेन अर्थ होची ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये कहार भी डिपेंडेंसी स्वीकार करिवो नाही ये टोटली फ्री टू कंडक्ट निजर इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर गुडा को मैनेज करने पे ये सक्षम कहा पर डिपेंडेंट नुह ताको हम कहबा सोवरेन जो देखिबा सोशलिस्ट सोशलिस्ट देखिबा फर्स्ट टाइम में सोशलिस्ट वर्ड हम जानी थिले 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड हेतला तीनटा वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटेग्रिटी ये तीनटा वर्ड ऐड हेतला ये जो सोशलिस्ट नेचर देखिबा ये कोथरे इम्प्लिसिट फंक्शन भाबे यूज हेछि द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सेथिरे मेंशन करा हेछि हमरो एज अ सोशलिस्ट नेचर काहे कि हमर तीन प्रकार प्रिंसिपल अछि सोशलिस्ट प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल आउट अछि इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल बा लिबरल प्रिंसिपल मध्ये अछि तीन प्रकार प्रिंसिपल सेथिरे सोशलिस्ट नेचर ता तार इम्प्लिसिट फंक्शन दा किनु 42th अमेंडमेंट एक्ट अनुसार ताको एक्सप्लिसिट फंक्शन भाबे ताको डिक्लेयर करा जाय इंडियन सोशलिज्म जे देखिबा हमें जदि हम देखिबा रशिया रो सोशलिज्म से होछ कोन टोटली मार्क्सिज्म ऊपर बेस करिछि जाकि टोटल कार्ल मार्क्स आइडिया ऊपर बेस करि अछि तनको से होछ कंप्लीट मार्क्सिज्म किंतु इंडिया रो सोशलिज्म से बोथ गांधीयन आइडिया ता सहित मार्क्सिज्म ऊपर बेस करि अछि बोथ आइडिया गुडा को हमें इनकलकेट करछि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया प्रैक्टिस कराउछि तारो एम कोन होछि टू एंड पॉवर्टी दारिद्र्य दूर करिवा इग्नोरेंस डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन सी लोक को इग्नोर कर परियानी अपॉर्चुनिटी क्षेत्र में कौन सी डिजीज को मध्य हमें कौन सी जगह मध्य इग्नोर कर परियानी जेहेतु सब लोकंकर लाइफ प्रीशियस तेणु सब लोकंकर बंचिबार अधिकार अछि सो दैट इज द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ तो राइट टू लाइफ अंडर रे तेणु सब लोकन को कौन लोक को आम डिजीज रहित मरिया अलाउ कर इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समस्त इक्वालिटी गोटे जुडिशियस वे रे समस्त को मिलवा आवश्यक तापर जे देखियो हम इंडिया रे मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल चलछि जो कि बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर गुडा को कोएग्जिस्ट करछन किंतु जे देखिबा हम चाइना जीवा चाइना रे साधारणतः चाइना जे देखिबा चाइना रे हमरो तार टोटल जो देखिबा इकोनॉमी तार सोशलिस्ट इकोनॉमी रे कोन हुए जे टोटल जेती जक तार एसेट अछि बड़ बड़ पब्लिक सेक्टर यूनिट गुडा को ऑल आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ता माने सब बड़ बड़ कंपनी गुडा को बा बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन गुडा को समस्त सब जाकू तार गवर्नमेंट ही कंट्रोल करियो किंतु
जदि अमेरिकन सिस्टम देखा अमेरिका रे कैपिटलिज्म चलती कैपिटलिज्म according to the capitalism all of the big assets were owned by the capitalist माने जो माने बहुत धनी लोक थांती पुंजीपति लोक मान थांती एटा पुंजीवाद तेणुक से कंट्री गुड़ाक साधारणतः जो कैपिटलिज्म टा बड़ बड़ धनी लोकों हैंड रे थाए तेणुक तार मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स गुड़ाक से कैपिटलिस्ट माने ओन करथन किंतु इंडिया रे बोथ किसी इंपोर्टेंट सेक्टर गुड़ाक पब्लिक सेक्टर गुड़ाक गवर्नमेंट कंट्रोल करते ता सहित इंडिया रे मध्ये बहुत गुडे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर गुड़ाक मध्ये ओरिजिनेट होइछन तो इंडिया रे इकोनॉमी जे देखिया दैट इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी नेक्स्ट देखिबा सेक्युलर सेक्युलर टर्म मध्ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आसला it is a part of the basic structure doctrine. What is the basic structure doctrine? Basic structure doctrine कहूची constitution नो दुई प्रकार पार्ट अछि किछि पार्ट को हम कहबा टोटल कंप्लीटली रिजिड पार्ट आ किछि पार्ट को फ्लेक्सिबल पार्ट constitution नो जेउ पार्ट को कौनसी समय रे मध्ये लेजिस्लेशन द्वारा कौन समय तक डिसमेंटल करा जाय पारे बा से पार्ट को चेंज करा जाय परिबो नाही ताको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहबा से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रे सेक्युलर टर्म टा तार गोटे पार्ट ता माने इंडिया रो कौनसी समय रे लेजिस्लेशन इस सेक्युलर प्रिंसिपल टा को एलिमिनेट करि परियो नाही ता विषय कौन कौन कोर्ट वर्डिक्ट देइचंदी सुप्रीम कोर्ट 1974 रे suppose the secular is implicit mentioned the article 25 to 28 फंडामेंटल राइट हमर अछि मौलिक अधिकार 25 रो 28 भीतर हमको धर्मगत अधिकार मिलछि सेही जगह रे हमर सेकुलर स्टेट रो प्रिंसिपल इम्प्लिसिट भाबे मेंशन कराइ पॉजिटिव सेकुलरिज्म इंडिया रे एडॉप्ट कराइ छि जार अर्थ होछि ऑल रिलीजन्स हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट देखो हम कहबा जेमिति कौनसी गोटे स्टेट रे गवर्नमेंट थाए कौनसी गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को जदि से बेसी इंफासिस देबो ताल दैट इज बायस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी रिलीजियस बैकग्राउंड रे से टोटली बायस जदि कौनसी गोटे गवर्नमेंट सब जगह रिलीजन को इक्वली ट्रीट करिवो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस प्रोवाइड करिवो तेबे सेही प्रकार रो सेकुलरिज्म को पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा जाय ये तो थिला सेकुलरिज्म नेक्स्ट देखिए डेमोक्रेटिक ये कहां को इंप्लाई करछि डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी ए जो हमर इंडिया रो जति जाको पावर सब जाको अछि दैट आर वेस्टेड ऑन द हैंड ऑफ द सिटीजन्स ता माने लोक मान को हाथ रे ही सब जाको पावर अछि केमिति through their participation in the their participation in the democratic politics in the democratic politics सब एडल्ट माने जो माने कि 18 प्लस से माने सब वोट दियंती से वोटिंग राइट्स माध्यम रे से माने निजर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करे गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिया द्वारा गवर्नमेंट पक्ष जो पावर आसे बा कंट्री रो सोवरेनिटी आसे तेणुक जेहेतु कौन सी गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री रे टोटल पावर बा सोवरेन पावर लोक मान को हाथ रे ही थाए तेणु ताकू कहबा हमें डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी तार अर्थ होची पोजीशन ऑफ द सुप्रीम पावर इन द हैंड ऑफ पीपल लोक मान को द्वारा कौन सी गोटे कंट्री रो सुप्रीम पावर को निज हाथ को आनिबा दैट कम्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी ता सहित गोटे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी फॉर्म करिया पे ता सहित गोटे एग्जीक्यूटिव रेस्पोंसिबल टू द लेजिस्लेचर ता माने गोटे लेजिस्लेचर रे गोटे गवर्नमेंट फॉर्म हो से गवर्नमेंट रे जो मिनिस्टर्स माने बा कैबिनेट रहिबे से माने कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल हेबे को केउ मान का आगे इन फ्रंट ऑफ द पीपल लोक मान का आगे से माने उत्तरदायी रहिबे तेणु से कहला एग्जीक्यूटिव इज रेस्पोंसिबल टू द लेजिस्लेचर
ता सहित इट एम्ब्रासेस पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सिस्टम रे हमर राजनैतिक सामाजिक आउ अर्थनैतिक जोटा हमर गणतंत्र एस्टाब्लिश है मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहार बेसिस रही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज समस्त एडल्ट वोट दे पारे इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट जेंडर रिलीजन व्हाटएवर से माने समस्त वोट दे पारे पीरियोडिक इलेक्शन इंडिया रे 5 इयर्स इंटरवल इलेक्शन गुडा कंडक्ट करा जाए रूल ऑफ लॉ नो वन इज एबव द लॉ समस्त से इवन प्रेसिडेंट हुंतु बा गोटे कॉमन सिटीजन हुंतु समस्त आगे लॉ समान तेणुक रूल ऑफ लॉ आम देश में आईन री शासन चलती इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आम देश में गोटे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रही जहाँफल से गोटे इम्पार्शियली सब जाक जिते कनफ्लिक्ट आसे गवर्नमेंट भितर किंबा गवर्नमेंट और सिटीजन भितर से समय जुडिशियरी एक्ट एज ए अंपायर से गोटे अंपायर भाया काम करे एज एन इंडिपेंडेंट अंपायर गोटे तेणुक आम जुडिशियर इंडिपेंडेंस रही एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कौन सी लोक को डिस्क्रिमिनेट करा मार्जिनालाइज करा जेकोसी ग्राउंड तार कम्युनिटी ग्राउंड हो तार बर्थ ग्राउंड हो कौन सी ग्राउंड केबे भी डिस्क्रिमिनेट करा पारियो नहीं रिपब्लिक मीन्स पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल इट मीन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास तार अर्थ होची इंडिया रे ए भलिया गोटे डेमोक्रेसी अछि डेमोक्रेसी जोंठरे जो रूल को माने रूलर हेबे दोज आर चूजन बाय द पीपल दोज आर इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट प्रीफिक्स जदि देखिबा हम कोन सुडो मोनार्क ठीक है मोनार्क रे किंग कर पुओ किंग हो किंग कर पुओ आउथरे किंग हो तो इट तो फिक्स थाए काहेकि जो देखिबा ना राजांगर पुओ व्यतीत अन्य लोक से आसन बा से थ्रोन को एक्वायर करिया बहुत डिफिकल्ट तेणु मोनार्क सिस्टम रे बा कौन से ऑटोक्रेटिक सिस्टम रे कौन हुए ना से जो रूलर्स गुड़ाक था रूलर्स गुड़ाक से चूजेन नॉट चूजेन बाय द पीपल दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड से हेरेडिटरी बेसिस रे हेरेडिटरी हेरेडिटरी से वंशानुक्रम रे से सिलेक्शन मिली थाए किंतु गोटे रिपब्लिक रे सब जो माने रूल करेंगे से रूलिंग लोक माने बा रूलर सब लोक मान द्वारा ही इलेक्टेड हेबे यह को कहबा रिपब्लिक सिस्टम हमर दुई प्रकार रो कैटेगरी रो देखि पारे हमें रिपब्लिक गोटे मोनार्कियल रिपब्लिक और गोटे साधारण गोटे इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कहबे मोनार्कियल सिस्टम कोड अछि ब्रिटेन तने ब्रिटेन रे तंगर क्वीन थांदी हेड बा बेले बेले मध्ये किंग थांदी तो क्वीन और किंग से माने हेरेडिटरी प्रिंसिपल ले आस्थानी तंकुरी तंकर जणे रहले क्वीन तापर तंकर आउ जणे क्वीन आछे से सेम फैमिली को बिलोंग करो तंकुरी ताको हम कहबा गोटे मोनार्की सिस्टम रिपब्लिक लाइक यूएसए एंड इंडिया ए समय जो हेड माने थांदी हेड ऑफ द स्टेट सेमान को कंप्लीटली सेमान लोक माने ही चूज करथान जो देखिए आर्टिकल 54 एंड 55 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विषय मेंशन कराए नेक्स्ट देखिए जस्टिस जो देखिए जी जस्टिस सिस्टम टा क्यों ठारू इंस्पायर है इट वाज इंस्पायर फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 1917 मसीहार जो रशियन रिवॉल्यूशन था रूस विप्लव से जस्टिस वार्डटा यही समय कौन कौन जस्टिस अच्छी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सोशल जस्टिस ता सहित इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस ए प्रकार जस्टिस गुडा विषय में डिस्क्राइब करिया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कौन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मान होची लोक मान भितर ये जो बाकी जस्टिस गुडा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस गुडा इक्वल मैनर रे
गोटे इक्वल प्रोपोर्शन रे समस्त को मिलवा को हम कहबो गोटे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने जस्टिस इन द सोशल ग्राउंड जस्टिस इन द इकोनॉमिक ग्राउंड सेमानकर जेमति कोई आर्थिक कंडीशन रे सेमान जस्टिस मिलवा दरकार सामाजिक क्षेत्र रे मध्ये सेमान जस्टिस मिलवा दरकार ता सहित सेमान राजनीतिक क्षेत्र रे मध्ये जस्टिस मिलवा प्रथम देखिबा सोशल जस्टिस equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex, etc. तेणु समस्त को इक्वाली इंडिया रे ट्रीट करा जिवो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन से लोक को निजर कास्ट कलर रेस रिलीजन आर बेसिस रे काहा को मध्ये डिस्क्रिमिनेट करा जाय परियो नाही कौन से गोटे पर्टिकुलर सेक्शन को मध्ये प्रिविलेज मिलिबो नाही improvement in the conditions of the backward classes and women इस समय बैकवर्ड जो माने कि बैकवर्ड रह जाइछन्ती और वुमेन मान को सेमान को एम्पावर करियर मध्ये व्यवस्था अछि दैट कम्स अंडर द सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स लोक मान को सेमान कर अर्थनैतिक कारक मान को बेसिस रे सेमान को डिस्क्रिमिनेट कराय पारे कौन सी रिच पर्सन को कौन सी रिच आउ पोर एमान भीतर जे देखिबा रिच पर्सन को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जीवो नाही किंबा पोर मान को डिस्क्रिमिनेट करा जीवो नाही एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन वेल्थ इनकम एंड प्रॉपर्टी तनकरी जो देखिबा हमरो इंडिया रे जो वेल्थ रहइबो इनकम रहइबो आ प्रॉपर्टी रहइबो सेमान भीतर अधिक रो अधिक इनइक्वालिटी रहिबा कथा नुह सिंस इंडिया फॉलोस ए सोशलिस्ट सिस्टम but this is far from true किनु वर्तमान जे देखिया सेटा हमरो सत्य ठारे बहुत दूर रे अछि काई इंडिया रे वर्तमान जे देखबा रिच माने अल्ट्रा रिच हेबा बसले और पोर माने सेवन पर एक्सट्रीमली मान कंडीशन खराब हेबा लागिला तरुकरी आम मान भीतर वर्तमान जो इकोनॉमिक गैप बहुत बढ़ी जाइछि ये मध्ये हम जानले पॉलिटिकल जस्टिस कोन होला समस्त को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलिबो equal access to all political office जेति जा राजनीतिक ऑफिस समस्त को इक्वल एक्सेस मिलिबो तो से इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट फॉर ऑल सिटीजन तो प्रत्येक कम्युनिटी पई रिप्रेजेंटेशन व्यवस्था मध्ये रहइबो एटा पॉलिटिकल जस्टिस लिबर्टी देखे लिबर्टी रे तो एक्चुअली जे लिटरल मीनिंग देखे से फ्रीडम जे देखिबा ए टर्म टा हमरो एक्चुअली हमरो इंस्पायर हिची फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो ए टर्म टा इंस्पायर हिची से समय किछि आइडियल थिला से फ्रेंच रिवॉल्यूशन समय रे से समय थिला लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ए तीनटा तार कोर प्रिंसिपल थिला नु सेगुडा को मध्ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हेता absence of restraints on the activities of the individual कौन से गोटे एक्टिविटी गोटे इंडिविजुअल रो एक्टिविटी कौन से व्यक्ति विशेष रो कार्यकलाप को कौन से जगह रेस्ट्रिक्शन करा जाय परियो नाही प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी कौन से व्यक्ति निजर व्यक्तिगत जो कहबे हम व्यक्तिगत कोन जेमिति हम कहबे व्यक्तिगत स्वभाव बा कौन से निजर व्यक्तित्व को गढ़िया पई हेले अपॉर्चुनिटी मध्ये मिलिबा निहा दरकार ता सहित ये कौन सिक्योर करछि द लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप एटसेट्रा ता सहित लोक माने कौन प्रोवाइड करा हेछि लिबर्टी ऑफ थॉट सेवन स्वाधीनता मिलछि चिंता करियार स्वाधीनता मिलछि निजको परिप्रकाश करिवार स्वाधीनता मिलछि जे कोनसी जिनिस रे विश्वास करियार मध्ये स्वाधीनता मिलछि पूजा करियार मध्ये स्वाधीनता मिलछि liberty is ensured in the preamble and the fundamental rights are not absolute but qualified liberty हमको स्वाधीनता मिलछि तार अर्थ नुह हम कागो गाली गुलोज करिया मते फ्रीडम मिलछि तबे मु रास्तार मझिरे चली कहा को असभ्य भाषा गाली करी तेनु एगुडा को हम फ्रीडम मिल तेनु करी बुझी दीज आर नॉट एब्सोल्यूट माने सब समय रे एगुडा को रही बोली बट क्वालिफाइड गुडी को क्वालिफाइड तू फ्रीडम मिलिबो किंतु एमिदी फ्रीडम नुह
जहाँकि आर्बिट्रारी आ जहाँ फल अन्यर किसी लॉस होती इक्वालिटी वेरी इंपोर्टेंट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन मानू स्टेटस अपॉर्चुनिटी से इक्वालिटी मिली absence of special privileges to any section of the society कौन सी गोटे पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी रो सेमानु किसी एक्स्ट्रा फैसिलिटी रो मध्य बा प्रिविलेज रो मध्य कौन सी व्यवस्था ना adequate opportunities for all without discrimination काहू बिना डिस्क्रिमिनेशन रे समस्त को adequate opportunities मिलबा निहाती आवश्यक तीन प्रकार इक्वालिटी लिखा है civic equality political equality तसद इकोनॉमिक इक्वालिटी civic equality देखिए आर्टिकल 14 accordingly equality before the law 15 रे prohibition of discrimination on the grounds of religion race कौन से लोगों को हम सेमानकर रिलीजन कास्ट रेस सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ताकू नेकरी हमें काहू डिस्क्रिमिनेट करि परिया नहीं आर्टिकल 16 कहूची इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कौन सी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट केस रे समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलियो ये होची आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 कहूची अनटचेबिलिटी ये जो छुआ छुआ भेदभाव अस्पृश्यता आपको निवारण करियर व्यवस्था रही सो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स ता पूर्व जो बहुत गुड टाइटल्स दिला राजा अधिराज महाराज से बड़ा टाइटल गुडा का एवोल्यूश करियर मध्य व्यवस्था रही सो ये जो आर्टिकल 14 15 16 17 18 ये सब जगह सिविक इक्वालिटी अंडर रे पॉलिटिकल इक्वालिटी कौन रहा आर्टिकल 325 ता अंडर रे नो वन इज इनिजिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स कौन से व्यक्ति को सेमानकर रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स ता ग्राउंड रे सेमान को इन एलिजिबल करा जीवो नाही इलेक्टोरल रोल रे एनरोल करिया कौन से लोक सिंपल भाषा जे देखा कौन से लोक को वोट देयारु वंचित करा जाय परिबो नाही आर्टिकल 326 326 अनुसार लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन से सब जाक एडल्ट फ्रांचाइज रो बेस करी रहबो माने समस्त एडल्ट मान को एलाउ करा जो वोट देयार इकोनॉमिक इक्वालिटी जे देखा आर्टिकल 39 equal right to adequate means of livelihood और equal pay for equal समस्त पुरुष एवं महिला मान को इक्वल वर्क इक्वल पे रो व्यवस्था रही आज मध्य जदि हम सोसाइटी रे देखबा जदि सेम काम को जने मेन करछु आ जने वुमेन करछु ताले हमें जे देखबा सेमानकर इकोनॉमिक कंडीशन बा सेमानकर फी स्ट्रक्चर रे मेल को अधिक प्रायोरिटी दे बा अधिक सेमान को अधिक पैसा दिया होची कि वुमेन मान को सेमान कंपैरेटिवली कम दिया होची सो आर्टिकल 39 कहूची जे जदि समान काम करछनी उभय ताले समान दरवा मिलिबा निहाती आवश्यक नेक्स्ट देखियो फ्रैटर्निटी जाउ कि हम भ्रातृभाव कहूचे इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड समस्त के भीतर ଗୋଟେ भ्रातृभावर व्यवस्था रही सिंगल सिटीजनशिप प्रमोट्स फ्रैटर्निटी इंडिया रे जते जाको कम्युनिटी अछि से समस्त आइडेंटिटी होची इंडियन तेनुकरे एई सेंस सेमान भीतर गोटे भाईचारार संपर्क सृष्टि करे हेल्प कर आर्टिकल 51 रो ए सेमान किछि फंडामेंटल ड्यूटी मध्ये दियाइछि से जगह रही कौन टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड सेमान भीतर भाईचारार संपर्क रहइबो आ सेमान भीतर समता ता सहित सेमाने सहावस्थान करिवे ता सहित प्रिएम्बल डिक्लेयर्स दैट द फ्रैटर्निटी हैज टू एंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्तिर आत्मसम्मान को वृद्धि करियारे फ्रैटर्निटी हेल्पफुल हेबो बोली प्रिएम्बल डिक्लेयर करछि ता सहित कोन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन देशर एकता एवं जेमिति कहबे देशर एकता एवं ऐक्य को अक्षुण्ण रखिया पई हमें परिकरबद्ध dignity of individuals is ensured by the fundamental rights DPSP and fundamental duties तले कौन सी लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये सब जगह द्वारा तार डिग्निटी एनहांस हो
कौन सी लोक जे फंडामेंटल राइट दिया जीवो ताहले ता पाखरे यथेष्ट फ्रीडम्स रहबो से निजको एक्सप्रेस करिया पे डीपीएसपी द्वारा तार वेलफेयर हबो तो डीपीएसपी इज मेंट फॉर ए वेलफेयर स्टेट फंडामेंटल ड्यूटी द्वारा तार गोटे सेंस ऑफ गोटे नेशनल इंटीग्रेशन बा नेशन को रेस्पेक्ट करिया पे तार गोटे सेंस डेवलप हो Thus, the integrity, unity and integrity of the nation, तार अर्थ कौन इट embraces both psychological and territorial dimensions of the national integration. तो लोक मानकर जो कोई पारे आमे सेमानकर मनस्तत्व रे कोई पारे आमे मनस्तत्व रो दिगरे नेशनल इंटीग्रेशन बा लोक माने सेमानकर देश को निजर मानस पटल रे भल पाइबे ता सहित सेमानकर देशर प्रत्येक कोण अनुकोण को मध्य सेमाने भल पाइबे नेक्स्ट देखियो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी जहाँ को आम सोशल डेमोक्रेसी में कहूँ ये क्या बेस कर प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन ट्रिनिटी ट्रिनिटी एथि कौन हो जे लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी ये तीन जाक टर्म एट ए टाइम से कंसीडर करा जाए बिकॉज द रीजन जो देखा लिबर्टी जदि रही ताहले भितर फ्रैटर्निटी आउ इक्वालिटी रही इक्वालिटी न रही फ्रैटर्निटी रही लिबर्टी मिल ना तेणुक ये सब ये जो तीन जाक कनसेप्ट लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी सब जाक आम एट ए टाइम ही कंसीडर करिया तेणु कहते यूनियन ऑफ ट्रिनिटी ये तीन जाक प्रिंसिपल यूनियन जदि ये भीतर कौन सी गोटे जिनस आबसेंट रहा ताहले आमर जो पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी अच्छी सेटा डिफिट हो विदाउट इक्वालिटी इक्वालिटी न रही लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर मेनी जदि इक्वालिटी रही ताहले किछि मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी मानक ऊपर एनफोर्स करियो निजर पावर को देखिए सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू द प्रीएम्बल माने प्रीएम्बल रिलेटेड किछि इंपोर्टेंट केसेस थिला से तीन को देखियो प्रथम देखा बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ वर्डिक्ट ऑन द प्रीएम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डिक्लेयर करथिले जे प्रीएम्बल कोन करछि जनरल पर्पस किछि प्रोविजन गुडा कर शो करे the term used in articles are ambiguous and some assistance from the preamble could be taken for interpretation एमिति किछि आर्टिकल अछि जोडा ambiguous आ एई आर्टिकल गुडा को जेतबेले कि सेगुडा हम ट्रीट करिवा से समय हम प्रीएम्बल को मध्य कंसीडरेशन नै पारे से समय सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करथिले दैट द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बेरुबारी यूनियन केस 1960 समय सुप्रीम कोर्ट रो वर्डिक्ट आसला जे से समय सुप्रीम कोर्ट कहले जे दैट द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे हमरो से जो प्रीएम्बल टा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट नुह अगेन पुनी थरे तार केस आसला केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट से समय कहले दैट द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए प्रीएम्बल रो गोटे प्रीएम्बल होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट आ निजर पूर्व ओपिनियन को मध्य बदले आ ए समय मध्य डिक्लेयर कला दैट द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड तो संशोधन कराई पारे सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर प्रीएम्बल को अमेंड करा जिवो किंतु मन रखिया को होबो ये जेमिति गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर को जेमिति डिस्ट्रॉय न करे अगेन पुनी थरे आउट केस आसला एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 केशवानंद भारती केस आसला 1973 ये 1995 पुनी थरे सुप्रीम कोर्ट आउ थरे अपहेल्ड कले डिसीजन को दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्तमान को गला जे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जे प्रीएम्बल होची गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रथमे बेरुबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे सुप्रीम कोर्ट कहले दैट द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इन द केशवानंद भारती केस the Supreme Court declared that the preamble is a part of the constitution but it can be amended तो amend करा जाय परियो but it should not destroy the basic structure LIC of India case रे
वर्तमान कहगला दैट द प्रिएम्बल इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज एति जय जगन्नाथ, जय हिंद।